Good morning, everybody. Now the time has come as we are approaching towards our attempt of CA Foundation December 2023 that we practice the papers given to us by our esteemed institute ICAI. So one of the MTP's series 1 has been just launched. So we are going to discuss that today, MTP 2023 Business Economics. So let's start with this series. We'll be discussing this series of questions along with the explanation of each question. And while I am solving the question, you will also get a glimpse of how to attempt a question, right? So let's start. The first question of paper 4 Business Economics and BCK, part 1 Business Economic, question number 1. Price discrimination will be profitable only if elasticity of demand in different markets in which the total market has been divided is. This is a direct question, bacha. If you all remember, I have made you underline all these points in your books. When we were doing Monopoly chapter, Monopoly में price discrimination का part था where we did degrees. तो degrees में यहाँ पर clearly mentioned था बेटा कि अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना तभी फायदेमंद होगा अगर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी. फॉर एग्जाम्पल इफ वन पर्सन इज इलास्टिक ही कैन एडजस्ट, उसको मुझे ज्यादा प्राइस चार्ज करके कोई बेनिफिट नहीं है बिकॉज ही कैन पोस्टपोन हिज कंजम्पशन. बट अगर एक इंडिविजुअल की डिमांड इन इलास्टिक है, फॉर हिम that product is urgent to be consumed, for that I can even charge a higher price. So it means price discrimination will be profitable only when elasticity is different. Is that clear? Elasticity has to be different. Then only I can discriminate between different people. I hope the first question is clear. Moving on towards the second one. An example of positive economic analysis would be, if you all remember what is positive, positive used to tell us what is or what was. Means it tells us about the facts. Past, present, future. It does not tell us about solutions. तो कौन सी statement है बेटा जो positive बताएगी? पहली बात, ये question, if you remember, it's in the back question of your book. I even told you ICAI takes the glimpse of such questions in forming RTPs and MTPs, and even similar line of questions can come in your exam. So this question, if you all remember, we have already discussed when we were doing back questions of the chapter. See, I told you determining, deciding, ये कोई भी part positive economics का portion नहीं है. तो पहली ऑप्शन बची analysis of relationship between price and quantity. So I'm just analyzing and focusing on the points that what would be the relationship. I am talking about facts. I'm not talking about any solution. I'm not deciding or determining or identifying anything. So my answer stands to be A. If you all remember, we have already done these questions. So you need to prepare pretty well. Next, question number 3. Kinged demand curve model of oligopoly assumes that. King demand curve, everybody remembers? This shape? This shape was due to indeterminable nature of demand curve of oligopoly because the competition between few people, few sellers was so intense that it was difficult to determine and to reach to a particular demand curve because one the move was there, another counter reaction and move was again from the opposite party. So what would be the answer? Let's read the question. इसके लिए मेरे को चारों ऑप्शंस पढ़नी पड़ेंगी because they are asking me about to choose from these four. पहला कह रहा है response to price increase is less than the response to price decrease. Can be response to price increase is more than response to price decrease. Then you're talking about elasticity of demand is constant. No. C. Talk about C and D option. यहाँ पर इलास्टिसिटी की बात तो बेटा नहीं आ सकती है बिकॉज द सेलर्स आर फ्यू और उसमें जो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आएंगे अगर फ्यू सेलर्स हैं तो देयर वुड बी लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. लेसर द सब्स्टिट्यूट्स
lesser would be the elasticity. तो elasticity less आएगी, ना constant आएगी, ना perfectly elastic, ना perfectly inelastic. Oligopoly के केस में elasticity होती है less elastic. तो C और D तो cancel हो गए. Now coming to point A and B. A and B कह रहे हैं response to price increase is less than response to price decrease. यानी अगर price बढ़ता है उसका रिस्पॉन्स हम उतना नहीं देते, पर प्राइस घट जाए तो हम रिस्पॉन्स ज्यादा देते हैं. Yes, this can be the answer. Why? If we talk about बच्चा few sellers, let's say the soft drink industry, Coke, Pepsi and all. यहाँ पर बच्चा प्राइस अगर एक बॉटल का 12 रुपीज है, प्राइस अगर 13 या 14 कर भी देंगे, 15 भी कर देंगे, nobody is going to mind much. They are still going to buy what they are actually buying. They are not going to stop their buying pattern. But अगर यहाँ पर एक ऑफर आ जाए, buy one bottle get one bottle free, now the Coke is ranging at 8 rupees, obviously its demand is going to rise. Means price fall में लोगों का response ज़्यादा आ रहा है as compared to the response in the price rise. That is why demand curve is not able to be formed in a proper pattern. Am I clear in the question number 3? I hope everybody is clear about it. Sure. Next, coming to bacha question number 4, Cobb-Douglas. I underlined this concept again in the books. This is a very good concept and it's a direct question. Cobb-Douglas का Cobb-Douglas में आपको याद होगा लेबर और कैपिटल का दिया जाता है, जहां पर हम कह रहे हैं लेबर रहेगा generally 75% and capital will be forming 25%. But now look at this equation. The question has to be asked for this equation. Can you see labor is half and capital is half? Means labor और capital दोनों हमने बराबर बराबर इंक्रीज किया है. ठीक है, तो अगर दोनों बराबर बराबर इंक्रीज किया है बच्चा, तो that will be indicating us constant returns to scale. अगर मैं दोनों को बराबर बराबर चेंज कर रही हूं तो it will be indicating us constant returns to scale. Next, business cycle emerged in. Yes, question is direct. Business cycles, fluctuations in the business, they are there only when the market is moving and working freely. Free market mechanism. ना socialist में, because socialist में government होती है, mixed में दोनों होते हैं, government plus market. पर अगर compare किया जाए तो business cycle सबसे ज़्यादा किस में merge होंगे? When the market is a free market economy. Clear? Next, coming to question number 6. With fall in price of commodity, demand of commodity increases. तो ठीक है, price fall, demand increases as it becomes relatively cheaper in comparison to other commodities. This effect is known as, it's a direct question. जब other commodities की बात आई तो obviously we'll talk about substitutes. It's a substitution effect. टी का प्राइस कम हुआ, कॉफी की डिमांड कम हो गई, because tea is now what? Relatively cheaper as compared to coffee, so tea will be demanded more. Next, normal profits earned by a firm are included in. This is also a direct question, बच्चा, if you all remember. Implicit cost हमने जब की थी, implicit cost was the cost which is the internal resources cost, the cost of the resources owned by the owner, by the entrepreneur, and normal profit was a part of implicit cost only. Remember, normal profit was the minimum amount of return which an entrepreneur must get to remain in the business. Clear? Next, question number 8. In the short run, total cost curve starts from origin or positive vertical intercept, positive horizontal intercept, none of these. If you remember, bacha, total cost curve ka diagram, this was total fixed cost. This was total variable cost and total cost was starting from here. ठीक है, total cost was starting from here. So from the positive side, vertical intercept, positive side, vertical intercept, answer is B. Positive, positive, vertical, vertical. यहाँ से start हो रहा है, ठीक है? Positive vertical intercept.
Next, question number 9. If a resource can be put only to a particular use, then opportunity cost is. देखो opportunity cost क्या होती है? The cost of next best alternative foregone, कि अगर मैं यहाँ नहीं इस चीज को लगाती तो कहीं और लगा लेती. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास व्हीट है, मैं उससे ब्रेड बना सकती हूँ या पिज्जा बेस. मैंने ब्रेड बनाया तो क्या नहीं बनाया? पिज्जा बेस. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी होगी ना जब आपके ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे. अगर उस रिसोर्स का यूज ही सिर्फ एक है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? नो, नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. Demand curve in case of monopolistic competition is more elastic as compared to demand curve under monopoly. That yes, it is true. Why? Because of presence of close substitute. ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं तो मोनोपोलिस्टिक फर्म में जो बायर्स आते हैं दे आर मोर इलास्टिक, दे कैन शिफ्ट टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल. पर मोनोपोली में इलास्टिसिटी नहीं होती. वी आर बाउंड टू बाय फ्रॉम द सेम सेलर. First 10 questions, I hope everybody is clear. Next, coming to question number 11. Scarcity definition, again the direct question. Who gave scarcity definition? Adam Smith gave wealth. Alfred Marshall gave welfare. Lionel Robinson gave scarcity and Samuelson gave growth. If you all remember. ठीक है, इन्होंने wealth की definition दी थी. He gave welfare. He gave growth oriented. The fourth one, last one, he gave scarcity definition. ठीक है. Next, 12th, demonstration effect. मैंने बोला था अंडरलाइन कर लीजिए, 4 effects थे. demonstration, bandwagon, snob and Veblen. साथ में इनके ऑथर का नेम भी बोला था, the one who introduced this concept. If you all remember, James Dusenberry, right? 12 का A. Next, 13. Substitution effect will be stronger when. Let's read the question. Substitution effect, इसके भी 3 points directly book में underline करवाए थे. कब stronger होगा? When goods are close substitutes. It is convenient to substitute and the substitution cost is less. So all of the above. It's also a direct question given directly in the book. Next, objective of advertisement and all other sales promotion activities by any firm is to do what? देखो, एड वगैरह सेल प्रमोशन हम क्यों करते हैं? डिमांड को बढ़ाने के लिए. अब डिमांड को इंक्रीज करना, इंक्रीज इन डिमांड. दीज आर द अदर फैक्टर्स. ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स विल लीड टू शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट. ठीक है, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है. अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं. ऐड कर रहे हो, सेल प्रमोशन कर रहे हो, तो क्या किस पर्पस के लिए? कि डिमांड बढ़े. डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. Next, question 15. A rise in price of a good dash consumer surplus. Price बढ़ेगा बच्चे, तो consumer surplus बढ़ेगा या घटेगा? What is consumer surplus? Price we actually pay, price we are willing to pay. इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना है. प्राइस वी आर विलिंग टू पे माइनस प्राइस वी आर एक्चुअली पेइंग, उसका डिफरेंस है. कह रहे अगर प्राइस ऑफ अ गुड बढ़ जाए तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या घटेगा? अगर ये चीज बढ़ रही है, आई वॉज विलिंग टू पे 10,000 बट एक्चुअली आई पेड फॉर द प्रोडक्ट 5,000, मेरा सरप्लस हो गया 5,000. अब अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस 8,000 हो जाता है, I was willing to pay 10,000 but now I paid 8,000, मेरा सरप्लस कम हो गया. आंसर इज बी. 3 का आंसर इज बी. 15 आंसर इज बी. Decreases consumer surplus. तो बच्चा, make one correction. I am looking at the answer key here. Answer is given as A in the answer key, which is wrong. तो आपको बी आंसर इसका मार्क करना है बच्चे. ठीक है, आई एम मार्किंग इट हियर. आंसर इन द आंसर की गिवन टू यू व्हेन यू विल डाउनलोड इट फ्रॉम द साइट, इट इज रॉन्ग. 15 का आंसर रहेगा बेटा बी.
Next, 16. If the firms are not working to full capacity, the supply will be. आपको ये मैंने पॉइंट कराया था, जब हमारी फुल कैपेसिटी नहीं काम कर रही है, अभी मतलब मेरे पास जगह है और काम करने की, कैन आई टेक मोर न्यू ऑर्डर्स? Yes, I will be elastic. Answer is B. Next, question 17. At higher prices, people demand more of certain goods. प्राइस के हिसाब से कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा? वेबलन इफेक्ट. नेक्स्ट, which is not a characteristic of land. Not a characteristic of land. See, land is a passive factor. This is true. Land is immobile. It is true. Land is heterogeneous. It is true. So all of these are factors, are characteristics of land. So again, there is a misprint, Richa. Either you deduct this not word from the question and do the answer as A. The answer as D. Which are the characteristics of land? All of the above. या तो ऐसा कर लो, और अगर आपको क्वेश्चन को नॉट में रहने देना है, अगर आपको क्वेश्चन को नॉट में रहने देना है, दूसरी ऑप्शन ये वाली चीज नॉट में रहेगी, तो आप इस डी ऑप्शन को आंसर मानेंगे, बट द आंसर हियर ऑल ऑफ द अबव की जगह हो जाएगा नन ऑफ दीज. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, which is not a characteristic of land. पर अगर आप पढ़ोगे तो सारे characteristics of land है. ठीक है, तो आंसर अगर ऑल ऑफ द अबव करना है बच्चा, तो क्वेश्चन में आपको नॉट वर्ड हटाना पड़ेगा. ठीक है, और अगर नॉट वर्ड के साथ करोगे तो सारे फैक्टर्स हैं उसके, तो आंसर कैन बी नन ऑफ दीज. देन डी में आपको ऑप्शन चेंज करनी पड़ेगी. देयर इज अगेन अ मिसप्रिंट इन दी एमटीपी गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. नॉट वर्ड को आप हटा लो, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. रिमूव दिस वर्ड नॉट. ठीक है, so answer would be all of the above. All of the above mentioned are the features of land. Land is a passive factor. Land is immobile. Land is heterogeneous. Next, the negatively sloped part of the long run average cost curve. ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. क्वेश्चन सेम टू सेम. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का नेगेटिवली स्लोप पार्ट. नेगेटिव स्लोप पार्ट मतलब हो गया बेटा ये वाला जो नीचे को जा रहा है, नीचे को जो जा रहा है, बाद में तो एलएससी अप चला जाता है यू शेप. जो ये नीचे को जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? खर्चा कम क्यों हो रहा है? व्हाई द कॉस्ट इज गेटिंग लो? बिकॉज we are getting some benefits from the expansion of my scale. So there is increase in productivity due to specialization. Cost कम क्यों होती है? Due to economies of scale. Cost कम हो रही है ना, LSC डाउन जा रहा है, नेगेटिव साइड जाना मतलब नेगेटिव स्लोप ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व मींस कॉस्ट इज फॉलिंग एज पर द डायग्राम. ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड. ठीक है, अपवर्ड जाना मतलब पॉजिटिव. जब डायग्राम अपवर्ड जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जब डायग्राम डाउनवर्ड आता है वो नेगेटिव होता है. तो यहाँ पर नेगेटिव के बारे पूछ रहे हैं, यानी कॉस्ट कम हो रही है. कॉस्ट कब कम होगी? जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर. लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हमने जब लॉ ऑफ प्रोडक्शन स्टडी किया था बेटा, उसमें हमने कॉस्टिंग स्टडी नहीं की थी. कॉस्टिंग वाज फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर. बाकी सारा कुछ प्रोडक्शन में काउंट होता है, पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन डिस्कशन लॉ ऑफ प्रोडक्शन में डिस्कस नहीं होती. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेटा 21. थर्ड डिग्री हम किसके हिसाब से करते थे? एज पर द लोकेशन. ठीक है, डंपिंग किया हुआ हमने चाइना का एग्जाम्पल. Commercial use, domestic use, yes. Railways for citizens, yes. As per the third degree of price discrimination में जो हमारा location wise भी रहेगा customer segment का, तो all of the above is the answer. All of the above. These examples are all given in your books. Next 22. Market structure in which many firms sells products that are similar but not identical. आप बताएंगे बेटा. That is monopolistic.
Similar but not identical means differentiated products. Which are substitutes but have some having different features. Clear? Next, lagging indicators. Number 23, lagging indicators. ये भी हमने किए थे. Lagging indicators कौन से होते हैं? Which are seen after the particular consequences happening. तो lagging में कौन सा आ जाएगा बच्चे? Unemployment, yes. Profits, interest rate, all of the above. जब कोई घटना घटती है उसके बाद, जैसे कोविड हुआ उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हुई, कई फर्म्स जो ऑनलाइन काम करने लगे उन्हें कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हुए, इंटरेस्ट रेट्स में अप या डाउन होना, ऑल इज द लैगिंग इंडिकेटर. नेक्स्ट, इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल. इंटरनल कॉज, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. All of the above. Internal causes. Internal means which belong to your nation, which might be in the control of the policies made by your government. आपकी मनी सप्लाई, आपके psychological factors and macroeconomic policies made by your government. पर external factors होते हैं जैसे war हो गया, कोई calamities हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है. Next, factors affecting demand for non-durable consumer goods. Factors affecting demand. All of the factors, your income, price, and the population. All of the above. Answer is all of the above. Demand forecasting a statistical method. देखो बेटा, ये तो दोनों हो गए theoretical methods. Statistical, जिसमें diagrams, facts, data presentation, graphs की मदद ली जाए, वो कौन सा हो गया statistical method. उनमें से वो कौन सा है? A. 27. Monopoly entry of new firms is of course restricted at all the times. 28. Theory of group behavior. Group behavior किसमें देखा जाता है बेटा? Few firms getting cartels, getting collided with each other, oligopoly. Allocation of resources is dealt with in which zone? हमने किया था resources are limited, they have alternative uses. ये problem किसमें डिस्कस की जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, पीपीसी पीपीए ये सब उसके कॉन्सेप्ट्स हैं. यू शेप कॉस्ट कर्व इज नेवर रिप्रेजेंटेड एज. कौन सा कर्व है जो यू शेप नहीं होता कभी भी? देखो एमसी भी यू शेप होता है, एसी भी यू शेप होता है, एबीसी भी यू शेप होता है. इफ यू ऑल रिमेंबर, एबीसी, एसी, फिर एमसी भी यू शेप आता था. सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो यू शेप नहीं होता. इट इज लाइक दिस. नेक्स्ट, बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज consumption possibility curve. Means what is the possibilities of my consuming of two different commodities given in the budget of income set. So budget line is also known as consumption possibility curve. याद रखिएगा इसको. Next, 32. All given goods are. देखो given goods की definition क्या कहती है? Those inferior goods whose demand rises even if their price is rising. So all given goods are inferior goods. Next, 33. The study of demand and supply model is useful in explaining, of course, demand and supply are two forces of the market. So how market works. 34. Dash is concerned with welfare preposition. Welfare means क्या करना चाहिए, what should be the solutions, which economics? Normative economics, which tells us about solutions, what should be, ought to be. Okay. Next, excess capacity is not found under. किस मार्केट में excess capacity नहीं होती? Perfect competition में. मतलब they are already working in full capacity, all are stabilized, constant prices. So अब prices ही constant हैं, they already know that they are not going to be benefited by any increase in their production levels. So everywhere the output and prices are same, so excess capacity is not found under which market? Perfect competition. Clear? Next, the regulatory mechanism of the market system is. Regulatory mechanism, मार्केट सिस्टम में हमें कौन कंट्रोल करता है?
अगर हम फ्री मार्केट है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, तो किस वजह से हम अपनी पॉलिसीज, अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं, अपने रूल्स को, प्राइसेस को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करते हैं? ड्यू टू कंपटीशन. तो कंपटीशन सेल्फ रेगुलेट्स अस. क्लियर? 37. Nicholas Calder propounded which theory? Cobweb theory. You remember? Cobweb theory was introduced by Nicholas Calder. It was given in the books. It's a theory of business cycles, Cobweb. Okay, this theory explains about the fluctuations caused in the business cycles. Next, during business cycles, the opposite of a peak is, what's the opposite of peak? The business cycle. है ना? ये है peak. इसका exact opposite यानी ये वाला हिस्सा trough. Depression, trough. Next, 39. If the market demand curve for a commodity has a negative slope, market structure must be. देखो, डिमांड कर्व तो ऑलमोस्ट सबका ही नेगेटिव स्लोप में रहता है. ठीक है, नेगेटिव स्लोप ही रहता है ना. प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, तो नेगेटिव तो रहेगा ही. अगर आप सिर्फ इस स्टेटमेंट के हिसाब से पूछ रहे कौन सा मार्केट रहेगा, तो वो मैं नहीं बता सकती. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट. यू नीड टू टेल मी अबाउट इलास्टिसिटी. ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट. नेगेटिव तो रहेगा ही, पर नेगेटिव में क्या इंक्लाइंड रहेगा, कितनी शेप रहेगी, वो बताना आपका जरूरी है. व्हाट इज प्राइस सीलिंग? क्वेश्चन नंबर 40. बेटा प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर. सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस. सीलिंग क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस. एंड फ्लोर क्या होता है? मिनिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज. तो प्राइस सीलिंग क्या होगा बेटा? मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज. नेक्स्ट 41. यूटिलिटी इज अ which concept? Qualitative or quantitative? देखिए बेटा, जनरली जो है यूटिलिटी हम लोग हमेशा करते हैं, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट? तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बच्चा, तो फिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? अगर हम बोलते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, तो यूटिलिटी मस्ट बी अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है, पर यूटिलिटी हमने अज्यूम करी हुई है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाले में कि इट कैन बी मेजर्ड, राइट? तो उस अकॉर्डिंगली बेटा फिर क्या आंसर बनेगा? सोचो. हमने बोला है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, तो इट्स क्वालिटेटिव, but we have assumed in law that it is quantitative. So utility is both qualitative as well as quantitative. ठीक है, इसका एक रीजन और भी है. बिकॉज यूटिलिटी हमें याद है, इट इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव इन नेचर. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर. दैट इज व्हाई इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना इसके, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच. दैट्स राइट. नेक्स्ट 42. Huge selling costs are incurred in which form of market? Selling cost means advertisements. So obviously answer is A, monopolistic. Then which one of the following is not an internal economies of scale? Internal means which is common to only my firm, belonging to only my firm. तो ये तो भाई मेरे इंडिविजुअल हो गए. पर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज,
पूरे फोकल पॉइंट को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वो मेरे अकेली फर्म को नहीं मिल रहा, तो इट इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, इट इज external. It will be common to all. 44. In monopoly, cross elasticity would be, बेटा monopoly में क्या substitutes होते हैं? नहीं. अगर substitutes नहीं होते तो cross elasticity निकाल पाओगे? नहीं. It is next. Vertical difference between TVC and TCAs मैंने बहुत बारी क्लास में कराया है. It is TFC. याद होगा अगर आपको. This is TVC. This is TC, so the gap between the two is TFC. It remains constant. Next, a necessity is defined as a good having the following features. Positive income elasticity, negative तो नहीं हो सकता. Income elasticity between 0 and 1. Yes, C can be the answer. Necessity क्या होता है? Anything which is urgently required. प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, मैंने वो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है. तो आई कैन बी सम टाइम टोटली इनइलास्टिक, परफेक्टली जीरो हो गया, और आई कैन बी लेस देन 1 यानी लेस इलास्टिक. I won't be able to adjust much. Sometimes if the necessity is a medicine, I won't be adjusting at all. Perfectly inelastic, zero हो गया. Or in some cases, I may postpone my consumption for a while, then I am less elastic. Answer is 0 and 1. 47. In the long run, some firms will exit the market if the price of the good offered for sale is less than. Price मतलब हो गया average revenue. It is less than average total cost. ठीक है, अगर आपके रेवेन्यू से आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो आप अपने उस बिजनेस को शट डाउन कर दोगे. अगर आपको याद हो तो शट डाउन में हम ज्यादातर ये कंडीशन करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते. बट अगर एसी दिया हुआ इस क्वेश्चन में तो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन एवरेज कॉस्ट ओनली बिकॉज एवीसी इज अ पार्ट ऑफ दैट. Next 48, coincident indicator is not indicated as. Coincident indicator कौन से होते हैं? साथ साथ चलते हैं. ठीक है. Inflation is a बच्चा lagging indicator. Industrial production, the leading indicator. Retail sales, leading indicator. New order for plant and equipment. Coincident indicator is not indicated as. New order for plant and equipment, this is again a leading indicator. बाकी ये तीनों leading, lagging और coincident भी हो सकते हैं sometimes, साथ साथ हो सकता है. जैसे कोविड आया साथ साथ महंगाई हो गई. ठीक है, कोविड आया साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सैनिटाइजर्स बढ़ गया. पर प्लांट एंड इक्विपमेंट नया खरीदना ये कोई कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है. आपने नया लिया है, अब उससे कॉन्सिक्वेंसेस आने बाकी हैं. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर. 49, इकोनॉमिक प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है बच्चा? When the revenue earned is more than the costs, price is greater than total cost. ठीक है, price is greater than total cost. हमने इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने शटडाउन पॉइंट नहीं पूछ रहे ना. प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या फिर एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज. टोटल्स दिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, अभी किया था हमने पीछे. 50 का आंसर इज ए. अगेन क्वेश्चंस आर रिपीटिंग. इम्प्लिसिट कॉस्ट ये अभी डिस्कस किए. गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्स मतलब विच आर यूज्ड टुगेदर. ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग ओनली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. इंडिफरेंस कर्व विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस. आपको करवाया ही हुआ है. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं कि रेशियो सेम रहेगी. ठीक है, अगर हम लोग एक पेयर ऑफ शू ले रहे हैं तो उसमें 2 ही जूते आएंगे, उसमें उतना ही लेसेस आएंगे. अगर हम लोग प्रिंटर ले रहे हैं तो उस प्रिंटर में जितनी इंक चाहिए उतनी ही इंक हर बार ही डालनी पड़ेगी. तो एक तो हो गया फिक्स प्रोपोर्शन. दूसरा फिक्स प्रोपोर्शन है तो उसका जो
वन गुड बाइंग फॉर द अदर गुड, उसका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स नहीं होगा, कांस्टेंट बनेगा, टू स्ट्रेट लाइंस बनेगी। ठीक है, अगर आपको याद हो एल शेप। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, बिकॉज गिव अप तो होता नहीं है, सैक्रिफाइस तो होता नहीं है। आंसर इज बोथ ए एंड बी। 53, if the price of goods fell, how the budget will be affected? प्राइस कम हुआ है, ऑफ कोर्स बजट लाइन में कुछ तो चेंज आएगा। द न्यू बजट लाइन, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बैक क्वेश्चंस में कराया हुआ। द न्यू बजट लाइन विल हैव द सेम स्लोप एज द ओरिजिनल इफ दे फॉल इन द सेम प्रोपोर्शन। द बजट लाइन जो होगी, पहली बात तो शिफ्ट करेगी, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। अब शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स राइट, तो उसकी पोजिशनिंग क्या होगी, डिपेंड्स। अगर सेम शेप लेगी तो ओरिजिनल स्लोप जैसी होगी। तो सपोज दिस इज योर बजट लाइन, अगर प्राइस बेटा आपका फॉल हुआ है फॉर बोथ द गुड्स, ऑब्वियसली बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। पर ये शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट जो है, दैट विल हैव द सेम स्लोप एज द ओरिजिनल as long as both are falling in the same proportion. This answer is more appropriate. Next, agricultural good market depicts, मैंने कराया हुआ बच्चा क्लास में, again perfect competition. 55, time element was conceived by Alfred Marshall, ये भी अंडरलाइन कराया था क्लास में। Efficient scale of production is the quantity of output that minimizes, क्या मिनिमाइज करना चाहते हो हमेशा? देखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट तो मिनिमाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो वेरिएबल फिक्स दोनों से बना है। तो कौन सी सबसे अच्छी प्रोडक्शन है जो ऑन एन एवरेज मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को सबसे कम कर दे? दैट वुड बी माय एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जो कि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसका बर्डन मुझे लेना ही पड़ना है, चाहे जीरो हो चाहे जितनी मर्जी मैं क्वांटिटी बन, पर एक ऐसी क्वांटिटी जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को भी डिवाइड करके सबसे कम पर ले आए, दैट इज गोइंग टू बी द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन कम करे। ठीक है, तो वो हो गया। अब क्योंकि मेरे को दोनों ही कॉस्ट बच्चे यहां पर कम करनी होंगी, कॉस्ट मेरे को मिनिमम कॉस्ट लेके आनी है, मिनिमम कॉस्ट लेके आनी तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम लेके जानी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी मिनिमम लेके जानी है। तो ऐसा एक ऑप्शन ऑफ आउटपुट जो ना केवल वेरिएबल कॉस्ट को कम करे बल्कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन भी कम से कम करे, दैट इज गोइंग टू बी माय एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चा जहां ए बी सी हो जाए और ए एफ सी दोनों मिल जाए, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है एवरीवन, 56 का आंसर would be C. I want variable cost also to fall, fixed cost also to be minimum. Next, the Indian government imposed heavy taxes, ठीक है, on a commodity to reduce its consumption by the public. Such heavy taxes will decrease the demand, यानी टैक्स बढ़े, of course प्राइस बढ़ गए होंगे, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तब गिरेगी ना जब मैं उस प्रोडक्ट के लिए इलास्टिक हूं, I can adjust my purchase to elastic greater than 1. Next, income elasticity for inferior good is always negative. Income बढ़ती है तो demand for inferior good घटती है, negative. Next, marginal cost is closely related to, ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बारी किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट किससे जुड़ी हुई है? वेरिएबल कॉस्ट से। क्यों? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। तो एडिशन टू टोटल कॉस्ट, जब मैं एक और आउटपुट बनाऊंगी वो वेरिएबल कॉस्ट भी तो होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही है जो चेंज होता है विद द चेंज इन आउटपुट, दैट इज व्हाई एमसी इज रिलेटेड विद वीसी। लास्ट क्वेश्चन, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज एआर कर्व, हम और भी क्या बोलते हैं? इफ यू ऑल रिमेंबर, एआर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, इसको हम प्राइस लाइन बोलते हैं, या मैंने एक और बोला था आपको कि दिस इज ओनली द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट्स। अगर आपको याद हो परफेक्ट कंपटीशन का, यही एआर था, यही एमआर था, यही प्राइस था और यही डिमांड कर्व था। तो सारी मार्केट्स के लिए जो एआर कर्व बनता है बच्चे, वही हमारा डिमांड कर्व भी होता है, इफ यू ऑल रिमेंबर।
So this winds up our MTP revision for business economics. I hope you all found these questions well explained with full of logic. Kindly prepare your stuff well, because you are noticing from this MTP pattern that the questions are repetitive. Questions are coming from the book back questions, and questions are even directly given in the language given in your book, which I made you underline. So kindly prepare in this manner. Okay, so I wish you all the best for the upcoming exams. And for any of the doubts, I'm always readily available, as you all know. So keep in touch. All the best. Give your 100%, bacha. God bless you.